हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज योर आरएसआर सर। वेलकम टू एक्सेलेंस इन फिजिक्स। इसी एक्सेलेंस इन फिजिक्स सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशन मोशन का जेई एडवांस पीवाईक्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन 11th एंड एडवांस पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नीट स्टूडेंट हो, जेई स्टूडेंट हो, दोनों को भी ये एडवांस का पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया तो कॉन्सेप्ट पे कमेंट ज्यादा आएगा। सो एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके लिए सी, ये रिंग एंड ए डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट side by side at the top of an inclined plane which makes an angle 60 with the horizontal. They start to roll without slipping. They start to roll without slipping. This is important. Without slipping. So that means it is pure rolling. So we have to understand that meaning of without slipping. So it is in pure rolling at the same instant of time along the shortest path. If the time difference between their reaching the ground is, so the time difference they gave, then the height of the top of the inclined plane in meters is. So see, ऐसा imagine करेंगे, this is inclined plane and this height you take it as h, and this angle they gave 60 degree and you take this one as h. They are asking this h value. इंक्लाइन प्लेन में हमको ऐसा कौन सा भी स्पेरिकल बॉडी और रिंग एंड डिस्क आल्सो व्हाइल कमिंग डाउन, इट्स एक्सेलरेशन, रोटेशन मोशन का बेसिक फॉर्मूला, इट्स एक्सेलरेशन ये, दैट एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला याद रखता है, याद रखना भी चाहिए। इंक्लाइन प्लेन में एक स्पेरिकल बॉडी विच इज एबल टू रोल and which has moment of inertia mk square. For that body while coming down, its a center of mass का acceleration a, it is acceleration of the center of mass. So ये कितना है? Acceleration of that body center of mass is g sin theta by 1 plus k square by r square. फिर इससे ये बॉडी इधर से इधर को आया तो this whole displacement consider as the whole displacement, we take it as s. If the displacement is s, then s equal to ut plus r t square you apply. So s equal to u initial velocity 0. So of acceleration into t square, say this is t1. So 1 is ring. So first ring के लिए apply करेंगे. So and this is going to be t1 value will be t1 is equal to 2s अपॉन a. एक्सेलरेशन a1 कहो रिंग के लिए, सो इसलिए a1. एंड व्हाट अबाउट डिस्क? डिस्क को अप्लाई किया तो सेम एनालिसिस, s इज इक्वल टू u0 ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क a2 टाइम t2 स्क्वायर. सो दिस इज t1 is going to be under root 2s by a1 and t2 will be equal to 2s upon a2 under root, and this is going to be t2, and they gave t2 minus t1. So t2 minus t1 दोनों का difference either t2 minus t1 or t1 minus t2, we don't know that because ये body का disk moment of inertia and ring moment of inertia पे depend होता है. So magnitude हम consider करेंगे. So magnitude t2 minus t1 will be ये दोनों का, so root of 2s by a2 minus root of 2s by a1. So a1 a2 वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर रिंग एंड डिस्क के लिए. सो ये वैल्यू कितना होगा? सो k वैल्यू, k फॉर रिंग, रिंग को हमने 1 कह रहा है, सो इसलिए k1 यू कैन टेक इट एज रिंग के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. एक्सप्रेशन डायरेक्टली डालता हूं. सो दिस इज k1 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर इज इक्वल टू k is radius of gyration. So radius of gyration is root of I by m. स्क्वायर किया तो I upon m. I बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए mr स्क्वायर. सो mm कैंसिल होगा तो r स्क्वायर.
So then k square value will be r1 square upon this r1 square. So that is equal to 1. And what about this is for k1 square r1 square for ring के लिए, and डिस्क के लिए सोचो, for डिस्क के लिए बात किया तो this is k2 square by r2 square. So k2 बोले तो I by m, I is mr square by 2, m कैंसिल होके r square by 2, नीचे r square कैंसिल होगा तो so it is going to be 1 by 2. So डिस्क के लिए k2 square r2 square वैल्यू 1 by 2 आया, रिंग के लिए k1 square r1 square वैल्यू 1 आया. ये दोनों इसी एक्सप्रेशन में रख सकते, एक्सरलेशंस कैलकुलेट कर सकते. वो एक्सरलेशंस हम इधर सबमिट करके थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके जाना, जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन में इधर इक्वल कर सकते हैं. इसको इक्वल किया तो हमको h आ जाएगा एंड s इन टर्म्स ऑफ h हम रख सकता है. सो एक्सप्रेशन में पूरा t2 माइनस t1 जो दिया था 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 10, 2 minus root 3 upon root 10 is equal to, and this root of 2s, s is going to be from this triangle, s value you can find out. So sin 60 if you apply opposite side by hypotenuse, so hypotenuse will be equal to that opposite side h by sin 60, you can say h upon sin 60. That means h by sin 60 is root 3 by 2. So 2h upon root 3. S value you can submit that. S is 2h by root 3. 2h upon root 3. And a2 value. So this factor is 1. 1 plus 1, 2. And g sin 60 root 3 by 2. So already here 2 is there. 2 times 4. And root 3 g by 4, and this a2 is root 3 g upon 4. So for numerator minus root of 2 s is same idea, s is 2h by root 3, 2h upon root 3, and a1 is this factor is 1 by 2. So 1 plus 1 by 2, 3 by 2, 2 numerator को जाएगा. So g and 2 20 sin, this is the 2 and sin 60 root 3 by 2 में कैंसिल हो जाएगा. So root 3 g by 3, root 3 g upon 3 इधर रहेगा. And इसी एक्सप्रेशन में भी देखे तो, and this is this factor is going to 1 plus 1 2 and root 3 by 2, 2 to 4. So denominator में 4 ऊपर गया था, perfect. And what about for this expression? This value is 1 by 2, 1 plus 1 by 2, 3 by 2, 2 न्यूमरेटर पे गया था. sin 60 में रूट 3 by 2 में 2 आएगा, 2 कैंसिल. सो रूट 3 g अपॉन, and this is 3, this is 1 by 2, so 3 by 2, 2 ऊपर गया था, so 3. So we got here root 3 g upon here 3. So 3 न्यूमरेटर का गया तो here into 3. चलो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हम h वैल्यू इजीली निकल सकता है. रूट 3 into root 3, 3g, here also 3g. So root of 3g, so root of this 3g denominator, you can take that LCM also. So at LCM is root 3 3 हो जाएगा, and root को अंदर है this expression. So root of 3 and into g also there here, and in numerator it is going to be, so 4 16, root 16 is 4 root h minus here this is root h and 4 3 is 12. So 12 is you can take it as, keep it in root only, root 12 and h, and this is going to be 2 minus root 3 upon 10. बस थोड़ा कैलकुलेशन संभाल के करना. अच्छा क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चंस, सो केयरफुली लेके जाना पड़ेगा. सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द डेटा, वी डन एवरीथिंग, जस्ट यू नीड टू फिगर आउट दिस h वैल्यू. रूट h कॉमन करो, सो 4 माइनस
रूट 12 आएगा. So that is root 12, you can take it as 4 root 3. 4 also you can take common. 4 if you take common, 1 minus root 3 बचेगा. नीचे root 3g, just go for simplification, you can figure out that h value. It is not a big thing. So इस तरह अच्छा क्वेश्चन हम थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन लेके जाना पड़ेगा. टू सेव द टाइम मैं कुछ कैलकुलेशन एंडिंग में पोर्शन स्किप कर रहा हूँ, रिमेनिंग एक दो स्टेप सब करके एच वैल्यू निकाल सकते हैं. सो आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा क्वेश्चन के साथ. सो लेट्स सी. See, here is another one question. The potential energy of a particle of mass m at a distance r from the fixed point is given by v in terms of r, that is kr square by 2, where k is a positive constant of appropriate dimensions. The particle is moving in a circular orbit of radius r. Particle circular orbit में जा रहा है, इस orbit को radius है capital R. About the point O, if v is the speed of the particle and L is the magnitude of its angular momentum about O, which of the following statements these are true? So more than one answer correct. So first thing, particle is in circular motion. So yes, particle is in circular motion. Here they said potential energy. It is potential energy. So potential energy हमको सिर्फ conservative fields को रहेगा. So the field is conservative field. So conservative force expression हम ले सकते हैं. Conservative force is negative of dou u by dou r. This is basic concept, conservative force को idea. So ये idea हम use किया तो then it is going to be negative of, that is u value k r square upon 2. इसको हमने differentiation करना चाहिए. So this is d by dr. So if you go to differentiation for that one, so minus k constant, 2 constant, r square को 2r, so it is going to be minus kr. And here this force direction and this r bar direction, and this minus indicates this r bar and force both are in opposite direction. So circular motion में जाते वक्त radius vector and force दोनों opposite direction में है. That means this is force is nothing but centripetal force. This minus sign indicates us this force is centripetal force. So centripetal force को expression हमने mv square by r ले सकते, that is equal to here k and r. I am taking only magnitude now. So r also if you take that side, that implies the speed value we are going to get, r came here r square. So v square is k r square upon m. So that means that v is going to be apply root. So that is k by m into r. So root of k by m into r is v. So they are asking that speed only. So in these expressions, if you take root of k by m into r, this one is correct. And now angular momentum also you need to figure out. So angular momentum is, as it is a particle about point O. So about the point O, particle is moving in a circular orbit about the point O. This is that point. About that point you want angular momentum. So angular momentum L is equal to m into this speed v into that r perpendicular distance. The speed direction will be like this. So this r is perpendicular distance. So mvr. So this is going to be m. V you got root of k by m into r. This is v, and already another one r is there. So now we are going to get this expression as m and root k by m. So this is r square. m root, so m numerator को root को अंदर लेके गया तो so m square होता. So root mk by 2r square, root mk, so root mk into r square. This is the expression. Root, this is correct one. Root mk r square. Yes, m root को अंदर लेके जाएंगे. So m square होता है, m एक बार कैंसिल होकर root mk r square. So this is a good question. छोटा क्वेश्चन. So रोटेशन में अच्छा अच्छा एडवांस क्वेश्चन से कंपेयर किया तो ये बहुत इजी वाला है.